Good morning, Suraj Singh here again. It's regarding instrument of accession. We're going to talk about instrument of accession, which is in relation to Article 370 in Constitution of India. ये वीडियो बना रहा हूँ मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू कश्मीर का हुआ था 1947 में भारत के साथ, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में पोस्ट किया था, लेकिन कोई वर्बल डिस्कशन भी करना चाहता हूँ। उसकी लैंग्वेज पहले देखिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का टाइटल है Whereas Indian Independence Act 1947 provides that as from 15th day of August 1947, there shall be set up as independent dominion known as India, and that Government of India Act 1935 shall, with such omission, additions, adaptations, and modifications as Governor General may, by order, specify, be applicable to Dominion of India. And whereas Government of India Act 1935 as so adopted by Governor General provides that an Indian state may accede to Dominion of by India by an instrument of accession executed by ruler thereof. ये तो बैकग्राउंड है, इसको आप समझ गए होंगे। फिर एक बार ले लीजिए। Whereas Indian Independence Act 1947 provides that as from 15th day of August 1947 there shall be set up an independent dominion known as India, and that Government of India Act 1935 shall, with such omission, additions, adaptations, and modifications as government may be by order specified, be applicable to Dominion of India. And whereas Government of India Act 1935 as so adopted by Governor General provides that Indian state may accede to Dominion of India by an instrument of accession executed by rule thereof. कहने का मतलब है ये हमारा इंडिपेंडेंट एक्ट है 47 का, जिसमें हमको इंडिपेंडेंस मिली है, उसके अंदर ये प्रोविज़न है कि कोई भी स्टेट इस एक्सेशन के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमारे डोमिनियन जो स्टैम्प फॉर इंडिया का उसमें आ सकेगी। ये एक प्रोविज़न था जनरल। अभी देखिए इसमें एप्लीकेशन आती है इसकी। नाउ देयरफॉर this application for Jammu and Kashmir that was general previously I just explained. Now therefore, number 1, I Shriman Inder Mahindra Rajeshwar Maharaja Jadira Shri Hari Singh Ji, ruler of Jammu and Kashmir, in exercise of my sovereignty in and over my said state, do hereby execute this instrument of accession. वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं श्रीमान जी इंद्र महाराज राजेश्वर महाराज अधिराज श्री हरि सिंह जी, जम्मू एंड कश्मीर के राजा, रूलर ऑफ द राजा, अपने अधिकार जो उनको मिले हुए हैं प्रभु सत्ता के अपने राज्य से, ये इंस्ट्रूमेंट, ये कानूनी कागज एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसको कहा गया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया। इसमें प्रोविजन देखिए। नंबर 1, I hereby declare that I accede to Dominion of India with intent that Governor General of India, Dominion Legislature, Federal Court, and any other Dominion authority established for purposes of Dominion shall, by virtue of this my instrument of accession, but subject always to terms therefore, and for purpose only of dominion exercise in relation to state of Jammu and Kashmir, hereinafter referred to as this state. Such functions may be vested in them by or under Government of India Act 1935 as enforced in Dominion of India on 15th day 9 August 1947. Which act as so enforced is hereinafter referred to as Act. ये इसको दोबारा सुन लीजिए।
I hereby declare that I accede to Dominion of India with intent that Governor General of India, Dominion Legislature, Federal Court, and any other Dominion authority established for purposes of Dominion shall, by virtue of this my instrument of accession, but subject always to terms therefore, and for purpose only of dominion exercised in relations to state of Jammu and Kashmir, hereinafter referred to as this state. Such functions may be vested in them by or under Government of India Act 1935 as in force in Dominion of India on 15th day of August 1947, which act as so is in force is hereinafter referred to as act. So रेफरेंस दिया गया है साहब को, राजा साहब ने रेफरेंस दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में दिया गया है। हम उस डोमिनियन के अंदर जा रहे हैं इंडिया के अंदर उन्हीं पर्पसेस के लिए जो उसमें मेंशन किया गया, इससे ज़्यादा नहीं। आई हेयर बाय एज्यूम, ये सेक्शन 2 है, प्रोविजन 2। आई हेयर बाय एज्यूम और आई हेयर बाय एज्यूम ऑब्लिगेशन ऑफ इंश्योरिंग, I hereby assume obligation of ensuring that due effect is given to provisions of Act within this state as they are applicable therein by virtue of this my instrument and accession. It's normal. Assume कर रहे हैं वही जो भी इसके अंदर ऑब्लिगेशंस हैं वो अप्लाई होंगे इस एक्ट के अंदर, हमारे स्टेट पे अप्लाई होंगे इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के द्वारा। नंबर 3 है आई एक्सेप्ट matters specified in schedules here to as matters with respect to which Dominion legislature may make laws for this state। देखिए कंडीशन डाल दी है, I accept matters specified in schedules, इसमें लगाएगा schedule, I accept matters specified in schedules here to as matters with respect to which Dominion legislature may make laws for this state। कंडीशन है, क्वालिफिकेशन बोल सकते इसको, एक स्केड्यूल उन्होंने लगाया हुआ है इसी ऑर्डर में, इसी एक्सेशन में, इंस्ट्रूमेंट में, जिसके लिए भारत का जो लेजिस्लेचर है डोमिनियन भारत का, वो नियम कानून बना सकेगा, इसके अलावा नहीं। I hereby declare that I accede to Dominion of India on assurance that if an agreement is made between Governor General and ruler of this state, whereby any functions in relations to administration of this state in this state of any law of Dominion legislature shall be exercised by ruler of this state, and any such agreement shall be deemed to form part of this instrument and shall be constituted and have effect accordingly। देखिए एक और प्री क्वालिफिकेशन है इसमें, इसे कहते हैं प्री क्वालिफिकेशन हो गई, ये भी एक कंडीशन हो गई है। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एक्सीड डोमिनियन, मैं भारत में आ रहा हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ ऑन एश्योरेंस, इस विश्वास पे दैट इफ एग्रीमेंट इज मेड, ये कोई फैसला होता है गवर्नर जनरल के बीच में और रूलर ऑफ दिस स्टेट के बीच में, इफ एन एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन गवर्नर जनरल and ruler of this state, whereby any functions in relations to administration in this state of any law of dominion legislature shall be exercised by ruler of this state, and any such agreement shall be deemed to form part of this instrument and shall be constituted and have effect accordingly। ये साहब कहते हैं कि यदि फ्यूचर में कोई फैसला होता है गवर्नर जनरल ऑफ भारत के और हमारे स्टेट के रूलर के, वो फैसला अगर होगा तो उसका जो सिग्नेचर होंगे एग्जीक्यूट किए जाएंगे, एक्साइज होगी, वो यहाँ के रूलर उसको एग्जीक्यूट करेंगे और वो जो भी फैसला होगा एग्रीमेंट होगा उस समय कोई भी इस इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा माना जाएगा। मतलब कंडीशन पे कंडीशन है। 5 देखिए, फिफ्थ, terms of this my instrument of accession shall not be varied by any amendment of act। क्या बात है, terms of this my instrument of accession shall not be varied by any amendment of act or of Indian Independence Act 1947 unless such amendment is accepted by me by an instrument supplementary to the instrument। देखिए साहब, ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है इसमें जो भी लिखा गया है या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो भी दिया गया है, मेरी मर्जी के बिना उसमें कोई चेंज इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नहीं माना जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे इसका। ये टर्म ऑफ एक्सेशंस जो है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस जो है और जो भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में दिया है, मेरी मर्जी के बिना आप उसमें
कुछ भी चेंजेस, कुछ भी अमेंडमेंट्स नहीं कर पाएंगे। The terms of this instrument of accession shall not be varied by any amendment of Act or Indian Independence Act 1947 unless such amendment is accepted by me by an instrument supplementary to this instrument। अगर कोई अमेंडमेंट मैं मानूंगा आपके कहने से या किसी भी बात से, तो वो भी एक इंस्ट्रूमेंट आएगा सप्लीमेंट्री स्टेटस का, इस पे लगाया जाएगा। Nothing in this instrument shall empower Dominion legislature to make any law। इस छठे में दिया है, सिक्स में। Nothing in this instrument, इसका इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं होगा जो एम्पावर करेगा नॉर्मन भारत को, शक्ति देगा। Nothing in this instrument shall empower Dominion legislature to make any law for this state authorizing compulsory acquisition of land for any purpose। कोई भी शक्ति भारत के कानून के द्वारा नहीं बनाई जा सकेगी जो यहाँ की जमीन को ले सके। But I hereby undertake that should dominion for purpose of dominion, हाँ मैं ये मानता हूँ, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भारत अगर डोमिनियन भारत के लिए कोई ज़मीन चाहे तो मैं उसको दे पाऊँगा। Undertake that dominion of purpose of dominion law which applies in this state deem it necessary to acquire any land, I will at their request acquire the land at their expense, or if the land belongs to me, transfer it to them on such terms as may be agreed or in default of agreement determined by an arbitrator to be appointed by Chief Justice of India। फिर एक बार पढ़ लीजिए। Nothing in this instrument shall empower Dominion legislature to make any law for this state authorizing compulsory acquisition of land for any purpose, but I hereby undertake that should Dominion for purpose of Dominion law which applies in this state deems fit necessary to acquire the land, I will at their request acquire land at their expenses, and if land belongs to me, transfer that land on such terms as may be agreed or in default of agreement determined by an arbitrator to be appointed by Chief Justice of India। यदि मेरे राज्य में कोई लैंड होगी और उसकी भारत को आवश्यकता होगी तो भारत के खर्चे पे मैं उसको एक्वायर करूँगा, ये अधिकार मेरा है। और यदि वो लैंड का मैं स्वामी होऊंगा तो अगर भारत चाहेगा तो वो लैंड मैं दूंगा उन टर्म्स एंड कंडीशन जो एग्री किए जाएंगे। और अगर उसमें कोई झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर उसका फैसला करेगा, वो माना जाएगा। नंबर 7, nothing in this instrument shall be deemed to be commitment। Nothing in this instrument shall be deemed to be a commitment in any way as to acceptance of any future constitution of India। Nothing in this instrument shall be deemed to be a commitment in any way as to acceptance of any future constitution of India। इस इंस्ट्रूमेंट में, इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो ये माना जाएगा कि हम भारत के संविधान को जो लागू होगा उसे मानेंगे। Or to fetter my discretion to enter into arrangement with government of India under any such future constitution। और ना ही हम इस चीज़ को मानेंगे, अपने अधिकार को ख़त्म करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम वही माने जो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। Nothing in this instrument shall be deemed to be a commitment। Nothing in this instrument shall be deemed to be a commitment in any way as to acceptance of any future constitution of India or to fetter my discretion to enter into arrangements with government of India under any such future constitution। हम भारत के संविधान को हमारी मर्जी होगी तो मानेंगे, नहीं तो हमें कोई फोर्स नहीं किया जाएगा कि उसे माना जाए, ये मतलब उसका। नंबर 8, nothing in this instrument affects continuance of my sovereignty। Nothing in this instrument affects continuance of my sovereignty। इस कागज में, इस इंस्ट्रूमेंट में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरी प्रभुसत्ता को ख़त्म करे या उसकी चलने से रोके। चलेगी मेरी प्रभुसत्ता ऐसे ही। Nothing in this instrument affects the continuance of my sovereignty in and over this state। इस राज्य की मेरी sovereignty रहेगी और save as provided by, इसके अलावा यदि और under this instrument the exercise of any powers, authority and rights now enjoyed by me as ruler of this state or other validity of any law present in force in this state। मेरी sovereignty रहेगी, मेरी प्रभुसत्ता रहेगी जब तक कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ना हो जो इसके चेंजेस करे, मेरी पावर्स को, अथॉरिटीज को अफेक्ट करे, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। 9th, आई हियर बाय डिक्लेयर, मैं घोषित करता हूँ, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एग्जीक्यूट, कि मैं ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एग्रीमेंट। सबमिशन, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट एक्सिक्यूट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ दिस स्टेट, that any reference in this instrument to me
or the ruler of this state is to be construed as including a reference to my heirs and successors. ये जो कॉमन है कि मैं घोषणा करता हूँ, इस इंस्ट्रूमेंट को मैं अपनी स्टेट के बिहाफ पे, अपने राज्य के बिहाफ पे एक रूलर की हैसियत से एग्जीक्यूट करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, और ये मेरे सभी आने वाले लोगों के ऊपर, आने वाले सक्सेसर्स के ऊपर लागू होगा, मान्य होगी सबकी. And this is given under my hand on 26th day of October 1947. साइन किया हरि सिंह ने. इसके बाद है आगे महाराज हरि सिंह साहब, महाराजा धीराज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद आगे आता है दूसरे माउंट बैटन साहब का. आई डू हियरबाय एक्सेप्ट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. ये कह रहे हैं माउंट बैटन साहब, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. आई डू हियरबाय एक्सेप्ट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन dated this 27th day of October 1947. माउंट बैटन ऑफ बर्मा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इसके बाद 27 अक्टूबर हो गया. भाई ये स्केड्यूल जो दिया हुआ है, स्केड्यूल लिख लीजिए. कंडीशन भी किस पर लागू होगा. मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच डोमिनियन लेजिस्लेचर में मेक लॉज फॉर स्टेट. ये दिया है जिसमें कानून जो भारत है वो बना सकेगा, उसमें डिफेंस शामिल है, डिफेंस रक्षा रक्षा में बना सकेगा. Naval, military and air force of Dominion and other armed forces raised or maintained by Dominion, any armed forces including forces raised or maintained by an exceeding state which are attached to or operating with armed forces of Dominion. कहने का नवल पे, मिलिट्री पे, एयरफोर्स पे उन कानूनों को हम मानेंगे. नवल, मिलिट्री एंड एयरफोर्स वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंटेनमेंट एरियाज, आर्म्स, फायर आर्म्स, एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव्स तो मानेंगे, कोई नई बात नहीं. इसके बाद बी में आए एक्सटर्नल अफेयर्स. नंबर 1 एक्सटर्नल अफेयर्स, बाहर के जो कितने भी अफेयर्स होंगे, विदेशी अफेयर्स. एक्सटर्नल अफेयर्स, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स विद other countries, extraditions including surrender of criminals and accused purposes to parts of ministries dominion outside India. Then admission into emigration and expulsion from India, including in relation thereto regulation of movement in India of persons who are not British subjects, domiciled in India, or subjects of any exceeding state, pilgrims to places beyond India. इसके बाद है naturalization. इसके बाद है सी में communications, post and telegraph including telephones, wireless broadcasting and other like forms of communication. To Federal Railways, regulation of all railways other than minor railways in respect of safety, maximum and minimum rates and fares, stations and service terminal charges, interchange of traffic, and responsibilities of admission of such on railways as carriers of goods and passengers, regulating minor railways in respect of safety, responsibility of administration of such railways as carriers of goods and passengers, maritime shipping and navigation, including shipping and navigation on tidal waters, admiralty jurisdiction, port quarantine, major ports, that is to say, declaration and delimitation of such ports, and constitution and powers of port authority therein, aircraft and air navigation, the provisions of aerodromes, regulation and organization of air traffic and aerodromes, lighthouse, including lightships, beacons and other provisions for safety of shipping of aircraft, carriage of passengers and goods by sea or by air, extension of powers and jurisdiction of members of police force belonging to any unit to railway area outside unit, and then ancillary elections to Dominion legislature subject to provisions of Act and of any order made thereunder, offences against law with respect to any of said matters, inquiries and statistics for purpose of any of aforesaid matters, jurisdiction and powers of all courts with respect to any of aforesaid matters, but except with consent of ruler of a exceeding state, not so to confer any jurisdiction, powers upon any courts other than courts ordinarily exercising jurisdiction in or in relation to. So ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्लियर है, साफ है कि हरि सिंह ने स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को जो एक नेशन था उस टाइम हमारे देश में एक्सेस किया था और कंडीशनल किया था. उन्होंने भारत के संविधान को मानने की कोई गारंटी नहीं दी थी. कहा था कि हम नहीं माने हमारी मर्जी. और अभी तक उसके बाद कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं आया है. इसमें जो कंडीशंस लिखी हैं, जो क्लॉज लिखे हैं,
जो स्केड्यूल दिया है वो सब वैलिड है आज की तारीख में भी, और इसीलिए उनको एक दूसरा संविधान दिया गया है। संविधान के साथ JNK का अलग से है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के रूप में, संविधान नहीं कह सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है वो है, उसमें प्रोविजंस अलग अलग दिए गए हैं। इसलिए ये एक्सेस इंस्ट्रूमेंट, एक्सेस टू नेशन जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको समझने की जरूरत है। हम नहीं समझते हैं, पता नहीं क्यों। साफ साफ लिखा है कि हम एक्सेस कर रहे हैं आपके देश में और हम बाउंड नहीं हैं आपसे। हम रक्षा वही उन्हीं चीज़ों से बाउंड है जो हमें इफेक्ट इनडायरेक्टली करती हैं। डिफेंस फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, इलेक्शंस वगैरह वगैरह। दिस इज वेरी क्लियर इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन है, एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन ऑफ दिस कंट्री। बाकी ने भी दिया था लेकिन इसमें स्पेशल है, और क्या मजबूरी होगी मैं नहीं जानता, लेकिन उस टाइम इसको एक्सेप्ट किया गया माउंटबेटन में। माउंटबेटन हमारे गवर्नर जनरल थे। सो इसके आप समझ सकते हैं कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन है। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन भी तो नहीं हो सकता है, कितना डिस्कशन करेंगे आप। इट्स वेरी क्लियर दैट इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट, is an access instrument of access to our country Bharat, which is being called dominion according to Indian Independence Act 1947, and clear conditions have been set up in this. Declaration has been made that this instrument is valid subject to this condition. The condition is very clear. They will, it's up to them whether or not they accept our constitution, and what they want to do we have to follow. If we don't accept this instrument, this means we don't accept them as well. If you say no, we remove this, we abrogate this article, and based on this access instrument, based on the accession instrument, Article 370 has been designed and equipped and included into our constitution as an inserted section, inserted article. So if this instrument is deleted, or you can say omitted or removed, it pulls out that article as well, which people are not able to understand, because both are intermingled, interrelated, intercoordinated. It's very easy to understand. If you remove that, this goes off, because Constitution of India is not absolutely accepted by them. They have a separate constitution in form of constitutional order. So what I have to say that try to understand based on your personal analysis, not on hearsay. Analysis says there is a conditional, this is a qualified accession. Qualified means limited. There's some limitations, not free, not open. Qualified accession it is. It's not absolute accession. There should have been a merger further based on supplement case. That clearly says there's a supplement order. So far there's no supplement order. So either you create that supplement order by adopt that procedure which permits such adaptation, which permits such order. If that is not created or that's not worked out, how can you say we remove? If you remove articles, you shall lose Jammu and Kashmir state. I think you understand that. Thank you very much. Fine. Bye. Bye. Bharat. Okay.